Assalamu alaikum, students of class 8. How are you, dear students? Students, today we are going to conclude the chapter number 1 on the universe of your geography portion. In the last lecture, I gave you the introduction of some terms that are used in the eclipses portion of your chapter. So today we are going to read in detail about the solar flares, the solar eclipse, the lunar eclipse, and the partial and total eclipse. So open up page number 6 of your books. Um, First of all, let us underline the definition of eclipses. Eclipses basically ग्रहण को बोलते हैं, जिसको हम normal अपनी terminology में ग्रहण बोलते हैं. सूरज ग्रहण is the solar eclipse and the चांद ग्रहण is lunar eclipse. So underline the definition of eclipses. These occur when three heavenly bodies come into line so that one blocks out the other. This is the definition of eclipses. It might come in your short questions. For us, it concerns only the sun, the moon, and the earth itself. Of course, हमारे solar system में जो हमसे related तीन bodies हैं, heavenly bodies, वो sun, moon और earth ही हैं. अगर प्लूटो में कोई eclipse होता है या यूरेनस में कोई एक्लिप्स होता है या मार्स में होता है एक्लिप्स, तो इट डजंट रिलेट टू अस, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो इन्हीं तीन बॉडीज से रिलेटेड है. द मोस्ट ड्रामेटिक इज द सोलर एक्लिप्स. उन्होंने बोला था जी सबसे ज्यादा ड्रामेटिक सोलर एक्लिप्स होता है. लूनर एक्लिप्स बेसिकली इतना ड्रामेटिक इसलिए नहीं होता आई थिंक बिकॉज नॉर्मली हम लोग जो है ना नाइट टाइम में इतना हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते मून को, और वैसे भी उसकी अपनी लाइट नहीं है. मून इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. सो कभी ऐसा भी होता है कि देयर इज नो मून ऑन द स्काई, कभी क्लाउडी वेदर है उस वक्त भी देयर इज नो मून. सो इट डजंट मैटर लॉट. बट जब पे सन की लाइट ब्लॉक आउट होती है तो फॉर श्योर हमारा डे टाइम जो है उसमें एकदम डार्कनेस फॉल्स ऑन द स्काई, और सारे बर्ड्स और एनिमल्स सारे डिस्टर्ब हो जाता है एक हमारा नॉर्मल डेली साइकिल. तो उसकी वजह से इट सीम्स more dramatic than the lunar eclipse. When the moon comes in between the earth and the sun, blocking it out, as you can see in this image, that the moon is revolving around the earth, and whenever it comes in between the sun and the earth, it blocks out the light of the sun. So there is a part of sun which is blotted out, and darkness falls on that part of the sun. So and this is solar eclipse, and whenever moon rotates to the back side on the right hand side, and the earth comes in between the sun and the moon, the sun's light towards the moon is blotted out, and this is called the lunar eclipse. So let us read further. Sometimes it is only a partial eclipse, so that the sun seems to have a bite taken out of it. I showed you a picture of this, that whenever there is a partial eclipse, the sun seems to have taken a bite out of it. But in a full eclipse, the sun disappears behind the moon, and in this case, we see the solar flares, and darkness falls on that part of the earth where the eclipse is taking place. When the eclipse is full and the sun is completely blotted out, you can often see with a telescope great flames leaping up hundreds of miles into the air. These are called solar flares. जैसे ही आपको picture में नजर आ रहा है सामने, these are solar flares. These solar flares are there all the time with the sun, but as the light of the sun is very bright, we cannot see them all the time except in case of an eclipse. ठीक है जी. सो इट्स वेरी क्लियर कि हमेशा इसी तरह सोलर फ्लेयर्स होते हैं, बट व्हेन द ब्लॉकिंग आउट इज टेकिंग प्लेस एंड द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सो दीज फ्लेयर्स कैन बी सीन वेरी क्लियर विद अ टेलीस्कोप. Now come to the lunar eclipse portion. In a lunar eclipse, the earth comes between the moon and the sun, and it throws a shadow across the moon. As you can see in the diagram on your page number 7, this is a picture of a diagram of a lunar eclipse in which the earth comes between the moon and the sun, and the light of the sun is blotted out. Earth blocks out the light of the moon, and the moon becomes dark, और हमें नजर नहीं आता moon sky पर.
So it's a very common and normal. A lot of times we don't see the moon on the sky, maybe when the weather is cloudy, or there is no moon in the phases of the moon. So it's very normal for us. But the solar eclipse was and still is very much feared by some people. Why is it feared? हमारे बहुत सारे सोलर एक्लिप्स के साथ बहुत सारे fears लिंक हुए हुए होते हैं. हम लोगों के बड़ों से एक बातें चलती आ रही हैं जिससे हम लोग इन चीज़ों में सुपरस्टिशंस की तरफ ज़्यादा हम लोगों की ट्रेंड होता है कि जी अगर आप सोलर एक्लिप्स में बाहर निकलेंगे और आप सूरज को देख लेंगे तो आपके बर्थ मार्क्स जो होते हैं उनको भी रिलेट किया जाता है, और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ और बहुत सारी डिजीजेज और उनको लिंक किया जाता है सोलर एक्लिप्स से, कि वो बाहर निकलने से या सूरज को देखने से आईज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. साइंटिफिकली लुकिंग एट द दिस थिंग, ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कॉन्सेप्ट कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ थ्री हेवनली बॉडीज व्हेन दे कम इन लाइन. तो इस वजह से हो जाता है. तो इससे कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते जिसकी वजह से कोई फिजिकल या बायोलॉजिकल या किसी किस्म की चेंजेस आए इंसानों में या एनिमल्स में. Animals seem to be affected as a strange silence falls on the land. Unusual times में darkness होने की वजह से animals और birds जो हैं ये थोड़े से disturb हो जाते हैं, because you know कि वो sunrise के साथ निकलते हैं birds और सारे animals, और फिर वो sunset के साथ चले जाते हैं. तो वो बीच में एकदम अंधेरा darkness जब हो जाती है तो उसकी वजह से disturb होके सारे animals की routine disturb होती है, उसकी वजह से वो परेशान होते हैं. ठीक है ना. तो ये वो कोई unusual चीज़ नहीं है. A total eclipse lasts only a few minutes. सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है टोटल एक्लिप्स. इसी तरह लूनर एक्लिप्स जो है वो फुल मून के साथ होता है एंड इट लास्ट अप टू 4 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं होता. एंड द शेडो बिगिंस टू मूव अवे. आहिस्ता आहिस्ता मून की रेवोल्यूशन के साथ और अर्थ की रोटेशन के साथ उसका शेडो मूव फॉरवर्ड करता है और वो एक्लिप्स डिसअपियर हो जाता है. एक्लिप्सेस कैन बी सीन ओनली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ on any occasion, but astronomers can forecast very exactly when and where they will take place. इनकी कैलकुलेशंस होती हैं एस्ट्रोनॉमर्स की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो उससे वो बहुत क्लियरली और एग्जैक्टली एस्टिमेटेड टाइम्स बता सकते हैं कि जैसे 12 बजे से 7 बजे तक देयर इज गोइंग टू बी अ सोलर एक्लिप्स, और लूनर एक्लिप्स है तो वो कितने टाइम के लिए होगा. तो बहुत अब तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ हम लोगों को टाइम्स पता चल जाते हैं एक्लिप्सेस के. When the Earth comes in between the Sun and the Moon, it casts a shadow on the Moon, causing a lunar eclipse. Lunar eclipse occurs only during full moon phases. ठीक है जी. Normally, during the total lunar eclipse, the Earth's circular shadow can be seen moving slowly across the disk of the Moon. When total eclipse, when totally eclipsed, the Moon is completely within the Earth's shadow. A total eclipse of the moon can last up to 4 hours. इसको जरूर underline कर लीजिए. It's important and can be seen from the side of the earth facing the moon. That is all for today. We've learned and read different terms related to both kind of the eclipses, the solar and the lunar eclipse. So your home assignment is to revise all these terms. That is all for today. Allah Hafiz.